देखते देखें बात सुने ग्रुप्स पे डिस्कशन इज नॉट आवाज ठीक है ना जी सर ठीक है ग्रुप्स पे डिस्कशन इज नॉट अ न्यू phenomenon it was I think Gustav Flaubert नहीं Gustav Flaubert तो मदाम बावरी वाला okay there was this guy called I think Gustav Le Bon. Yes, there was this book called The Crowd, a study of the popular mind. Then in 1920, this was 18. Then in 1922, Sigmund Freud published Group Psychology and the Analysis of the Ego. ठीक और उसकी आखिरी किताब थी द एंड ऑफ सिविलाइजेशन एंड इट्स कंटेंट. वो ऑलरेडी देख रहा था हिटलर का कैसे लोग सो एसेंशियली उनका जो ग्रुप का था ना वो एनालिसिस और ग्रुप बिहेवियर दैट वाज मोर टुवर्ड्स मॉब बिहेवियर. ठीक और मॉब बिहेवियर के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है जिसमें मैं टाइम नहीं है वरना मैं आपको बताता. जैसे जैसे ये लिंचिंग करते हैं इंडिया में जैसे पाकिस्तान में हम करते हैं क्रिश्चियंस के साथ या जैसे वो दो बच्चों को मारा था. सो या मॉब में आके स्ट्रीट्स तोड़ना. सो दैट इज वन थिंग. मैनेजमेंट साइंस में आपके ख्याल में सबसे पहला बंदा कौन होगा? हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल्स थे. यस याद है आपको? सर वो जो स्केलर चेन उसमें था और वो जो बाकी हेनरी फॉयल द फादर ऑफ मैनेजमेंट. हेलो जी जी कहीं बोलो सर वो उसमें उसने कहा था कि कॉर्प्स डे वो एक yes what spirit डी कॉर्प यानी आपस में बॉन्डिंग आपस में मोरल आपस में एक लाइक that is a principle, the fundamental principle of management. If you don't have a spirit de corps, which is like if you don't work as a group, if you don't learn and succeed as a group, okay, there's no point in management, right? But generally Kurt Lowen को इससे attribute किया जाता है because I don't know और उसका स्टूडेंट था फेस्टिंगर. Anyhow, आपको मैं एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. रिमेम्बर मैंने आपको पहली ही क्लास में कहा था कि मोस्ट ऑफ आवर लाइफ in modern society is organizational life, or to be more precisely institutional life. I don't want to go into the depth of institutionalism, but I told you that we were born in an organization. Until that, we move from school, college, university, job, even hospital. Even if you die in a hospital, or then so our life is mostly moving from one organization to another organization, and maybe after death. Definitely after death, the highest organization में अप्रेजल होता है ना तो जजमेंट डे पे भी होगा. ठीक. Now within these organizations, most of our time is spent in working in one group or another group. According to one research, जी मैंने कहा मोस्टली ऐसा ही होता है सर. हाँ जी. थिंक ऑफ अ हनीकॉम्ब. साहब आपने शहद की मक्खियों का छत्ता देखा है? जी सर. उसमें सेल्स होते हैं छोटे छोटे. थिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के और उसमें जो छोटे छोटे सेल्स हैं थिंक ऑफ देम एज ग्रुप्स और कमेटीज और व्हाटएवर. ठीक. सो अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च कोटेड बाय हैंडी, ठीक, on average
Daily, a manager spends 50% of his time working in one sort of a group or another. And senior managers work in 80% of their, on average, 80% of their daily time is spent in working in one sort of an organization or another sort of an organization. Now notice one sort of a department or a group or another sort of a group. Now notice here, these groups can be permanent, like departments, or these groups can be temporary, like a committee to find out कि बिलावल भुट्टो ने क्या किया. ठीक है. These groups can be formal, like a committee is an ex officio, it's formed by the organization. Department is formed by the, but we also already know from bank room that they are informal groups, and they develop their own norms, and their norms, systematic soldiering, they are more overpowering than the formal organizational norms. Okay? So Levin ने कहा कि when you spend so much time, how group influences you, जो हमने ऐश का experiment है, how different group processes work, how groups decide, okay, what are the fundamentals of group. Kurt Lewin was the father of this phenomenon, studying group psychology. Ernest Jones भी था, yeah. But actually, Kurt Lewin came up with this term, group dynamics. आपने काफी दफा सुना होगा ना? ठीक है जी? Hello? जी सर. Okay. जी सर. So, of course, ये groups हैं सारे जो मैंने बात की within the organization, formal, informal, temporary, permanent. इसके बाहर भी होते हैं, friends, family, अब तो WhatsApp ग्रुप भी आ गए, ठीक है, they are groups. और मैं देख रहा हूँ उनका क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है लोगों को. ठीक, फैमिली एक ग्रुप है, वो इग्नोर हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप के अपने लोग. Now, to begin with, what is a group? Can anybody define a group? If you've noticed, I'm a person of first principles, so I always start with the definition. If you're not clear about what is an attitude, okay, what are the elements of attitude, if you're not clear about what is personality, okay, you cannot move ahead. So what is a group? Somebody asks you. WhatsApp ग्रुप तो कहीं है ना, हमारा भी है, लेकिन ग्रुप होता क्या है? सर कॉम्बिनेशन होता है लोगों का, एक ग्रुप बोलते हैं उसको. कलेक्शन ऑफ और पीपल. जी सर, कलेक्शन ऑफ पीपल. प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं जहाँ पे हम सारे के सारे एक ही जगह पे अपना एक कंसेप्ट दे रहे हो उनका या किसी पॉइंट पे हम टेस्ट डिस्कशन या कर रहे हो. लाइक माइंडेडनेस काफी हद तक. एक सेकेंड. सो उनका एम जो है वो सेम हो. एक सेकेंड, मैं बना, मैं इसकी बात करना है. ह्यूम ने कहा इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, दैट्स इट. ठीक. और मोहसिन ने उसमें ऐड किया कि जिनका सेम एम हो. मैंने आपको पहले भी शायद एग्जांपल दी हो. अ ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, और मोर और लेस होपफुली उनका एक ही एम है, टू एंजॉय द इवनिंग, टू हैव अ गुड मील. आर दे अ ग्रुप? ग्रुप है जी सर, ग्रुप है वो. ग्रुप है. ग्रुप ऑफ पीपल. ग्रुप ऑफ पीपल तो, सर आपकी आवाज बहुत कम हो गई है. ग्रुप ऑफ पीपल तो मतलब कहीं है ना, मतलब सो जो भी, जहां भी 6 लोग इकट्ठे हों, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. सर वो 2 से 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप है वो उस वो. पे आते हैं, नंबर पे आते हैं, बट पहले डेफिनेशन पे तो आए. आप कहें जी कि जितने भी लोग हैं
वो इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पीपल, बस दैट्स ग्रुप, राइट? कोई ऐसी बात नहीं है। सर जहाँ 6 लोग खड़े होंगे सर, सर जब हमारी आई उसको देखेगी तो सर हम उसको इंग्लिश की टर्म में कह सकते हैं दीज ग्रुप ऑफ पीपल। सर एक सर्कल करके हम कह तो ऑल दो सर आप एक थोड़ा डीप मीनिंग होगा ग्रुप का, फर्दर चीजें भी होगी, लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट की विंडो से देख रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ दीज ग्रुप ऑफ पीपल इज सिटिंग इनसाइड द रेस्टोरेंट, सो द सर दे कैन बी जैसे एज अ दे कैन बी कॉल्ड एज अ ग्रुप। जैसे बंच ऑफ कीज होती ठीक है। है, क्यों सब राणा साहब ने अच्छी बात की, एज अ लेमैन सर सॉरी एज अ, आपने कहा सर क्या? एज अ लेमैन मे बी, वैसे हाँ, मैंने कहा कि जनरली हम कह सकते हैं। बट इज जी इट सर। एकेडमिकली? अच्छा, ये क्या है? ये ऐसी 6-7, मतलब जितने भी हैं ये ऐसे ही बैठे हुए थे किसी रेस्टोरेंट में, किसी ने कहा इकट्ठे बैठ जाओ तस्वीर खिंचवा लो, ऐसे सर ही आपकी ग्रुप स्क्रीन। फोटो सर, जी। ग्रुप फोटो। ग्रुप फोटो है ना, रैंडम लोग थे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे सारे, उनको एक फोटोग्राफर ने कहा जी मैं आप रैंडम लोगों की तस्वीर लेना चाहता हूँ, तो ये ग्रुप है, रैंडम लोगों का ग्रुप है, इकट्ठे हो गए, ठीक, मेक सेंस ना? सर एम सबका सेम ही है कि उन्होंने तस्वीर खिंचवानी है, तो वो सारों का सारों का एक ग्रुप हो गया। तो ये रैंडम लोग रेस्टोरेंट के हैं जो कि उठ के आके बैठ गए हैं, और ये इनका एम खाना खाना था, और अब एक एम है कि तस्वीर खिंचवानी है, सो ये ग्रुप है। सर एट अ टाइम मल्टीपल एम भी तो हो सकते हैं। एक सेकेंड, ये ग्रुप है ना अकॉर्डिंग टू योर जी डेफिनेशन? सर। जी सर। अच्छा, सो ये रेस्टोरेंट में आपको लगता है कि रैंडम लोग इस ये आपको इट रेजोनेट्स विद यू? अब ये रैंडम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और आप तस्वीर खिंचवा रहे हैं? जी सर वो जंग न्यूज वाला आ गया, उसने कहा मैंने छापनी है तो सारे इकट्ठे हो जो रेस्टोरेंट की आएगी तो सर वो मान जाएंगे, ठीक लेकिन है। अदरवाइज नहीं भी मानेंगे सर, वो कहेंगे कि हमने फोटो नहीं जब खिंचवानी, आप ये मैं फोटो इसको नहीं खींचते हैं, जानता। अच्छा आप ये फोटो देखते हैं, आपको आपके जेहन में पहला ख्याल क्या आता है, ये क्या है? तो तब तो यही आता है द ग्रुप ऑफ पीपल इनसाइड द रेस्टोरेंट एट दैट स्पेसिफिक टाइम और पीरियड, और द वो तो मैंने आपको बता एंजॉयिंग द दिया मील ना, या फिर कोई अगर आप मेरी प्रोमोशनल प्राइमिंग एक्टिविटी। अब अगर आप मेरी प्राइमिंग भूल जाए, वैसे ही ये पिक्चर देखें, अब आप राबिया भी तो क्या, कह सकते हैं ना सर। आपके जेहन में क्या आता है? तो कोई प्रमोशन चल रही है। राबिया, सर उसका कनेक्टिविटी इशू आ रहा है सर। जी, क्या लगता है आपको इसको देख के पिक्चर को, कहीं हूँ? सर मैंने पहले ही बताया सर, आपकी वो स्क्रीन मूव नहीं कर रही मेरे उस पे, वो वर्ड के केएलपी के ऊपर ही रुका हुआ है। सबका सर उधर ही मुझे रुका भी हुआ है। स्क्रीन ही नजर आ रही। अब सर सेम वही है। क्या? केएलपी। कौन सी केएलपी? सर वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना, सर जहाँ पे वर्ड केएलपी। डॉक्यूमेंट आपका पूरा वो नीचे पिक्चर नहीं शो हो रही। नहीं, वो तो हमारा केएलपी उसका था ना, वो तो हमने खत्म कर दिया। सर विंडो वहीं पे रुकी हुई है। अच्छा, सर मुझे तो आपकी फोटो नजर आ रही है, आपकी वीडियो मतलब योर फेस। ठीक है, अब क्या नजर आ रहा है? सर वही वर्ड का डॉक्यूमेंट डिसीजन मेकिंग वाला, केएलपी जो लिखा था। यस सर, वर्ड डॉक्यूमेंट आ रहा है केएलबी तक। अब सर वही डॉक्यूमेंट है सर। अब मूव हुआ है, फंडामेंटल ऑफ ग्रुप बिहेवियर, यस और सर। थोड़ा और नीचे सर। सो आपने कहा जी कलेक्शन ऑफ पीपल विद द सेम एम, ठीक, मैंने मान लिया, और मैंने कहा कि जब आप ये पिक्चर देखते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? एक फैमिली है, खानदान है पूरा। फैमिली कैसे होगी, ये रेस्टोरेंट में बैठे लोग एक जंग ग्रुप के नहीं?
सर आपकी आवाज कम हो गई है। ये फैमिली आपने कैसे कह दिया? फ्रॉडियन स्लिप हो नहीं गया। सर, इस पिक्चर को देख के मैं वैसे अगर वो पिछली एग्जांपल जो थी उसको तो मैं देख के ये कहूंगा कि ये किसी वो न्यूज न्यूज का ऐड है, न्यूज़पेपर में आई है तो ये मैंने आपको पिक्चर। प्राइम कर दिया ना, लेकिन आप प्राइम हो गए ना। लेकिन वैसे आपको ये पिक्चर मैंने बार बार कहा, वैसे देखे तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? ये सर इनको देख के तो पहला फैमिली आता है, बिकॉज एक दो तीन फैमिली क्यों जनरेशन के आता है? लोग हैं, तो अच्छा, आमतौर पे परसेप्शन जैसे। यस, ठीक। सो इट्स अ फैमिली। ठीक, ओके। कॉमन गोल पे बाद में आएंगे, सेम एम पे बाद में आएंगे। बहरहाल, a collection of people with same aim, a group of people sitting in a pub or a group of people sitting in a cinema have same aim. ठीक है, a collection of people of enjoying the movie, but academically speaking that is not a group. Why? Well, the handy's definition is very specific, very parsimonious, to the point. A group is any group of individuals, any is critical, who perceives themselves as a group. Now any मतलब ये है more than one. बहुत से लोग when I say group, आप लोग क्या सोचते हैं? आपके जहन में कितना नंबर आता है? 3 2 3 4 8 से 14। 2 से ज्यादा दो, दो, दो। ये 2 चीज सर। होती है जिसको कहते हैं dyad. Dyad is a group which is consists of two people, husband wife. अभी बच्चे नहीं हुए। आपने टेनिस देखा है? एक तो सिंगल खेल रहे होते हैं, एक डबल्स खेल रहे होते हैं। ठीक, जी सर। यस सर। वो डबल्स की दोनों साइड पे दो दो लोग होते हैं। दैट इज अ टीम, दैट इज अ ग्रुप। ठीक, तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हु परसीव देमसेल्व्स कि हम एक ग्रुप हैं। देखिए, परसेप्शन, आई टोल्ड यू व्हाट इज परसेप्शन। रियलिटी इज सब्जेक्टिव, सो वी यूज आवर all this sensory phenomenological data. We try assign meaning to it, we try to make sense of it, we try to objectify it through our perceptual processes to make it real. So our perception of the subjective data is our reality. Sometimes our reality can be extrapolated to the perception of the whole group. The whole group has a single reality. It can be broadened to the whole tribe or nation state, और even आजकल की दुनिया में कोरोना के चक्कर में it could be the whole world. Okay, देखिए, आप मेरी बात सुनिए. What is real? What is real? Okay, perception is, do you think it's real? I'm gonna ask you. अभी मैं कम्युनिटी के लेवल पे जाता हूँ. Think about it. Which group do you think are you part of? Which group is real for you? Are you part of a Muslim Ummah? Are you part of Pakistani nation as a group, as a community? Are you part of some ethnic group like Pashtun or Punjabi, or sub-ethnic group like Jat or Gujar? Or are you simply confused? नहीं सर, हमने तो सर कैटेगराइज तो भैया, किया हुआ खुद को। One by one, जी. अच्छा Mohsin साहब, सर हमने कैटेगराइज तो किया हुआ है कि पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, आपका देन ग्रुप क्या हमारे। है? आपका कम्युनिटी क्या है? आपकी लॉयल्टीज कहाँ लाया करती है? सर लॉयल्टी है मेरी अपनी, जिस तरह जैसे मुस्लिम्स है, अब मुस्लिम्स में फर्दर जिस तरह से सेक्ट है पासपोर्ट आपने उसमें पाकिस्तान का लिया हुआ, कुवैत का ले लें, वो आपको देंगे? मेरी फैमिली देंगे नहीं, लेकिन वहाँ के वो जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैं उसको फॉलो अप करूंगा तो वो मुझे देंगे। So the point, what is real for you, Umma? सर जो That अभी है,
Umma, that is real for you. Okay, I'm not Yes, sir. judging you. I'm saying that you कम्युनिटी लेवल पे आपके लिए वो रियल है और आप उस अपने आप को उस कम्युनिटी का हिस्सा समझते हैं. ये एक अलग डिबेट है कि वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं. ऐसा जी सर उम्मा का जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है सर उससे तो डिसएग्री करते हैं क्योंकि वो तो सर कोई हसन साहब सॉरी टू इंटरप्ट. इससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप या कोई और? मैंने वो पहले आप अपनी वो बात कर दें फिर ये बात करें. जी सर जी सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी आपने ग्रुप्स बताए हम सब परसीव उसको इस तरह करते हैं सर हर ग्रुप का हम अपने आप को पार्ट समझते हैं जैसे मोहसिन ने भी कहा सर जैसे होता है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम तो सर जो मतलब क्लोज क्लोज से शुरू होता है इसी तरह सर जो हमारा सबसे क्लोज है पहले हम अपने आप को सर ये कहेंगे कि जो आपने बताया कि एथनिक वाइज हम ये हैं उसका भी कोई सब डिवीजन होगी जैसे और अगर हमारी लॉयल्टीज है वो भी हमारी जैसे ही हम सब ग्रुप की तरफ जाएगी तो हम सब ग्रुप की तरफ लॉयल्टी ज्यादा होंगी फिर बिगर 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 और सर उम्मा के बारे में जो आपने कहा उसमें सर पॉलिटिकल जो एक एंगल है उम्मा का जो आजकल है सर वो एक और चीज है लेकिन जो हमारी परसेप्शन है उम्मा की उसकी तो हम उसको उसके साथ हम करते हैं कि हम उम्मा का पार्ट है ऑफ कोर्स वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही जैसे करनी चाहिए लेकिन सर तो हमारी परसेप्शन में तो हमें लगता है कि उम्मा perception है is reality. और वो होनी चाहिए Your perception is your reality. My perception is my reality. यस बट सर हमारी रियलिटी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी बिल्कुल सर ऐसे रियलिटी काफी कंफ्यूज है. जी सर ठीक है, वो जंपिंग फ्रॉम वन. Anyhow, this argument was just कि perception is reality, and if you take it, then Sheen entered into this conversation. He made it a bit sophisticated and said, well, a group is a group of a collection of people who interact, who are psychologically aware of each other, and who perceives themselves as a group. Now, इसमें 5 point फिर Fraser here is sort of he is the final word on. He gives 6 characteristics जो fulfill होने चाहिए to call a group or collection of people a group. Number 1 is perception. अच्छा, इसमें मैंने ऊपर ये क्वेश्चन रखा है, is EMBA4 a group? जी, do you perceive each other as a, think of your family. You think your family is real and you are a real member of it? जी सर. बड़ी श्योरिटी आप. अच्छा, ये कहाँ से इतनी श्योरिटी आ रही है? It's real. It's a real group and you're a real member, right? Fair enough. So this is family. Okay. What about this? Is this a real group? Perception. Mohsen, ये white shirt वाला बंदा नजर आ रहा है? जी सर. इसकी जगह मैं तुम्हें बिठाऊं. Do you feel a part of this group? Would you perceive कि मैं इसका एक part हूँ? I have some role to play here. सर अगर तो मुझे वेन्यू बता दिया गया और साथ में डिस्कशन की इंटेंशन भी बता दी गई. Do not intoxicate the situation with the exuberance of verbosity. सीधा सीधा बताओ, तुम इसकी जगह बैठे हो. You, अच्छा, do you perceive this meeting to be as a real group? Like, okay, you can जी use सर. like this with family. Is it like similar to like family? तो सिमिलर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, बट ग्रुप है. So it's ये not भी that ग्रुप है, real. फैमिली It's ग्रुप not है. that real, right? Like EMBA4 is not real, right? सही है ना? You're with me? सर डिस्टॉर्शन है थोड़ी सी वॉइस में नहीं, लेकिन पॉइंट क्लियर हो गया ना. द फ्रेजर का फर्स्ट पॉइंट था that
perception. You perceive the group to be real, okay, and your membership in it as real. But many a times in organizations, especially highly organic organization, mechanistic organization, SOP, ये form भरो, वो form भरो, फलाना करो. Look at this girl. She's hardly interested. So the first thing is, do you perceive a collection of people, maybe it's two people at a ad, do they perceive each other as a group? Perception is critical. Okay? Is EMBA4 a real group? Do you perceive each other as a group, as a real group? आप सब 5 लोग अपने आप को परसीव करते हैं कि आप एक ग्रुप है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल तो ग्रुप बन गया ना, ऑर्गेनाइजेशन बना के आपको बिठा दिया EMBA4. सवाल ये उठता है कि आप क्या आपस में एक दूसरे को परसीव करते हैं एज अ ग्रुप? सर मैं तो करता हूँ सर. अच्छा, चले फिर मैं एक स्टेप आगे कुछ स्टेप्स आगे जाता हूँ. Effective relationships. A group is not emotionally or affective, समझते हैं ना, affect emotionally neutral. Or it's not in members of the group are not indifferent. अच्छा, constantly family को ज़हन में रखना, are not indifferent. अब इसमें ये मतलब नहीं है कि they like each other or love each other. इसका मतलब है कि they fight, लड़ाइयाँ भी होती हैं, प्यार भी होता है, फीलिंग्स होते हैं, अफेक्ट होता है. पॉजिटिव अफेक्ट कभी होता है, कभी नेगेटिव अफेक्ट होता है, लेकिन अफेक्टिव न्यूट्रलिटी या इमोशनल न्यूट्रलिटी नहीं होती, इंडिफरेंस नहीं होता. तो मोशन का मूड खराब है, आपको इसकी कितनी एक फिक्र है? सर एक आध दफा हुआ था इसका, तो तरह मैं तो फिक्र थी कि क्यों हुआ है. अच्छा, सो आप जो बाकी 4 लोग हैं उनसे इमोशनली अटैच्ड हैं, उनकी जिंदगी की खुशियों में आप शरीक होते हैं, उनकी खुशियां आपको खुशी देते हैं, उनकी गम आपको गम देते हैं. जैसे मेरी मदर खुश हो तो मैं खुश होऊंगा, मेरे फादर गमगीन हो तो मैं गमगीन. जी सर, अटैचमेंट है. अच्छा, जी सर सर. कॉन्फ्लिक्ट और ट्रस्ट, सर कॉन्फ्लिक्ट भी होते होंगे सर. और सर एक तरह का कहीं ना कहीं जाके किसी लेवल पे सर थोड़ा सा वो भी होगा कि हमने नंबर्स अच्छे किसके आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं. लेकिन सर एट द एंड ऑफ द डे ये भी है कि सर हमारा ग्रुप में एक तरह का एक दूसरे के सर एक दूसरे की डिफिकल्टियां उसमें सर उस तरह फैमिली की तरह तो नहीं, लेकिन एक लेवल तक तो सर फील होता है. चलो जी, हम नॉट ओनली परसेप्शन का पॉइंट हो गया, आप लोग एक दूसरे के लिए साथ काफी इमोशनली अटैच्ड, ठीक. लेकिन ये बहुत सी कंपनीज करती हैं कॉर्पोरेट रिट्रीट्स, ठीक, जहाँ पे बॉन्डिंग, लोग आपस में बॉन्डिंग बनाए, उनके रिलेशनशिप्स बने, वो एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हो, ठीक. आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग गलत कह रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन समटाइम्स पीपल कंफ्यूज फेमिलियरिटी विद अटैचमेंट. आप 4 साल से इकट्ठे रहे हैं तो लोग एक दूसरे से फेमिलियर हो जाते हैं और उनको लगता है कि शायद हम इनसे इमोशनली भी अफेक्ट होते हैं, ठीक. यानी
आपको आज तक कोई एक इंसिडेंट क्रिटिकल कोट कर सकता है कि रात को किसी ने 2 बजे मोहसिन ने आपको बुलाया और आप चले गए? सर मैं कोट कर सकता हूँ सर। हाँ जी, किसने बुलाया? सर हमारा एक और पुराना क्लासमेट था यानी इस और वी आर टॉकिंग अबाउट EMBA 4। सर EMBA वो पिछले सेमेस्टर में हमारे साथ था, इस सेमेस्टर में हमारे साथ नहीं है, यानी कि हमारे ग्रुप का पार्ट है और अभी भी सारे उसके साथ इन टच भी हैं। ही कॉल्ड मी लेट एट 10 PM और 11 PM और मैं यहाँ से तकरीबन 40 to 45 किलोमीटर दूर उसके पास गया था, फेयर एनफ। यानी कि मेरी उसके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट है, एक फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं हमारी। तो दैट इज पारिंग जो यहाँ हो रही है सब ग्रुप्स, आप और वकास, आप एक दूसरे के जी साथ सर, बहुत ज्यादा अटैच्ड जी सर, because we have एग्जैक्टली। the same values, attitudes and beliefs. Birds of the same feather flock together. पहले दिन ही मैंने नोटिस कर लिया था, आप दोनों हमेशा इकट्ठे सर बैठे। वैसे सर मैं एक बात करना चाह रहा था। मैं आता हूँ ये सो ये फाइनल पॉइंट में जी सर। ये फाइनल पॉइंट में बता रहा हूँ कि ओके organizational setting में because it's formal, people work in offices, they have an instrumental approach बहुत से लोगों की, so bonds नहीं होते उस तरह के जो ग्रुप में होने चाहिए। सो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट रिट्रीट्स बनाती हैं ताकि लोगों के बॉन्ड्स बने। ठीक, दिस इज वन फैक्टर, इफेक्टिव relationships, emotional bonding,